Hey, hi friends. So इन्वेस्टमेंट सत्संग कल तो नहीं हो पाया, बट आई ट्राई कि आज इन्वेस्टमेंट सत्संग में ले लूँ आप मतलब जो कल का बचा था. सो आई वाज नॉट एबल टू कम लाइव यस्टरडे. ये अनअनाउंस्ड है. आई वाज नॉट श्योर वेदर आई डू इट और नॉट, बट नाउ लगा कि चलो यार ठीक है, एटलीस्ट थोड़ी देर तो ये सेशन ले लेना चाहिए. सो जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स हम कर सकते हैं. So that's what we will try. Unannounced है, तो I just hope that कि ज्यादा लोग नहीं होंगे. Not that कि नहीं ज्यादा लोगों ने नहीं आना चाहिए. It's just that unannounced है. So that's why less number of people will be there. So I'll be able to take good amount of questions. So hopefully you people will ask. I hope मेरी आवाज ठीक से आ रही है because I am not in a typical मेरा जो सेटअप है उसके उसमें तो नहीं हूँ मैं. So I just hope that कि आप लोगों को आवाज वगैरह ठीक से आ रही होगी यहाँ पे. एंड देन वी विल स्टार्ट. सो अमित माने जी का कमेंट है, हेलो सर, आषाढ़ी एकादशी चा हार्दिक शुभेच्छा. यस, कल काफी बड़ा दिन है हमारे लिए. एटलीस्ट जो विट्ठल भगवान को मानते हैं बहुत ज्यादा, तो महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा उत्सव होता है ये. और भी स्टेट्स में आई नो दैट पीपल आर फॉलोइंग दैट, सो इट्स अ ग्रेट थिंग. So happy Ashadi Ekadashi to everybody. So I'll voice is fine. Okay, perfect. तो मतलब लिंक्डइन से तो आ चुका है, वॉइस अच्छी है. यूट्यूब पे कैसी है, आवाज ठीक से आ रही है? सो आई जस्ट होप दैट कि आवाज ठीक से आ रही होगी. सो आई स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस. सो डीमार्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं. मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जाके तो नहीं पढ़ा है, बट डेफिनेटली डीमार्ट की अगर हम बात करेंगे तो बेस इफेक्ट काफी कम था लास्ट ईयर का. बट द पॉजिटिव थिंग्स, आई थिंक फ्यू पॉइंटर्स जो हमारे एनालिस्ट लोग हैं उन्होंने भेजे थे मुझे, तो आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन दोज थिंग्स. सो डीमार्ट के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं. So I think consolidated revenue were up by 94%. I think the base effect was quite low, but even quarter on quarter also the number is quite good. 14.2% का quarter on quarter growth हुआ है consolidated revenue में, which is very positive. Gross margins जो है वो जून क्वार्टर में 16.3% आए हैं, vis-a-vis लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 13.1%. तो आई थिंक ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्कआउट हुआ है in this particular quarter compared to last year's quarter, because revenue जब बढ़ जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होती है, वो तो ज्यादा नहीं बढ़ती है. तो उसके बाद जो सेल होता है एक लेवल के ऊपर, तो आई थिंक ऑपरेटिंग लिवरेज कीप्स ऑन इंप्रूविंग. एबिटा मार्जिन्स वही सजेस्ट कर रहे हैं. तो जून 2022 मतलब ये क्वार्टर में जो एबिटा मार्जिन्स थे वो 10% के थे. लास्ट क्वार्टर में इट वाज एट 8.4%, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वाज 4.3%. तो सिक्वेंशियली भी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर. सो सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ जो हुई है 14.2%, आई थिंक दैट हैज टर्न्ड आउट रियली वेल फॉर दिस कंपनी. सो नॉर्मली जब डिस्कशन होता है द काइंड ऑफ वैल्यूएशंस दिस कंपनी इज एंजॉइंग, तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन है, या फिर द डिबेट बिटवीन प्रीमियम वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इज आल्सो जस्टिफाइड इन सम केसेस. तो उसमें से एक केस एवेन्यू सुपरमार्ट की भी है. अब कोई ऐसा बड़ा प्लेयर डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई द स्केर्सिटी प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है एवेन्यू सुपरमार्ट्स को. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे जैसे हो सकता है आने वाले समय में रिलायंस रिटेल का लिस्टिंग हो जाए, so that will also create another pressure on the valuation of avenue supermarts. So those things we cannot deny, so we'll have to wait. So that's why जब भी मार्केट को ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि टाइम करेक्शन की, प्राइस करेक्शन की, तो आई थिंक ये जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे जो कंपनीज ट्रेड कर रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर बन ही सकता है. एंड दैट्स व्हाट has happened with Avenue Supermarts. So every quarter we are seeing results are improving, but the rally is not continuing. या मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट को, मार्केट is trying to correct this particular stock price. So I think these things can happen. So that's why when the news is negative, the corrections are high, that is the time I think acquisition point of view से ऐसी companies पे ध्यान रखना चाहिए. Typical euphoria में acquisitions of these kind of companies should be avoided, ऐसा मुझे लगता है. So that
those will be the bad installments of your investments, ऐसा history has suggested. So from that point of view, थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट सेइंग नहीं नहीं मतलब बिल्कुल ही एलोकेशन नहीं करना चाहिए, बट द एलोकेशन परसेंटेज शुड बी ऑन अ लोअर साइड, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है. भूमिका गर्ग जी का क्वेश्चन है यहाँ पे, टाटा पावर नेक्स्ट 5 years में कैसे लगता है, व्यूज क्या है. सो आई थिंक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी आ चुकी है. एनुअल रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे फाइनेंशियल्स के सेक्शन में वो एनुअल रिपोर्ट है, एंड आई सजेस्ट यू पीपल शुड रीड दैट एनुअल रिपोर्ट. आई थिंक विजन काफी अच्छी रखी है कंपनी ने. whenever companies talk about next 5 years 10 years तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगता है. But when companies are talking about 2045, 2050, it shows the longevity of that particular company's earnings. So I think ये मुझे काफी अच्छा लगा. So डिस्काउंटिंग के लिए जो ग्रोथ डिस्काउंटिंग होती है, वैल्यूएशन निकालने के लिए जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे जितना लंबा इसका अर्निंग विजिबिलिटी नजर आता है, दैट इज वेरी गुड. Plus the kind of focus currently governments are having, all the economies are having, even private players are also focusing on the clean energy, green energy. I think all those things are actually working really well for this particular sector, जिसमें टाटा भी बहुत ही फोकस्ड है. तो करंटली अराउंड 34% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, and they are focusing that in next 10 years time the revenue should be 80% of the revenue should be coming from this green energy. So all those things are working really well for the company, and that's why this is one company I feel it should be on your radar. Not a direct suggestion or a recommendation, but definitely it should be on your radar. हाँ, I think आज 55th हमारा सत्संग है, तो एक बार छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं तो 55% का जो डिस्काउंट है मॉनसून सीजन का था, हमारा मॉनसून सेल सीजन, तो वो डिस्काउंट इज अवेलेबल. यू कैन गो एंड एंजॉय द डिस्काउंट. 4500 रुपीज में आप हमारे सारे पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. सो InvestYadnya.in को विजिट करना मत भूलना. आई थिंक वी हैव अ बिग टीम टू मैनेज, सो डेफिनेटली दैट्स व्हाई ये जो भी रिसर्च आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश हमारे स्टॉकोमीटर प्लस से होता है, फंडोमीटर से होता है, या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो से होता है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिसर्च हमें जस्टिफाई अगर हम करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, एंड दैट टीम अगर आपको एक बड़ी कंपनी चलानी तो डेफिनेटली आप लोगों का सपोर्ट जो बहुत अच्छी तरीके से हमें मिल रहा है वो जारी रहेगा. एंड आई नो दैट वी लाइक डिस्काउंट, सो दैट्स व्हाई मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% आप लोग यहाँ पे हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे ले सकते हो. सो मार्केटिंग जॉब इज डन. नाउ आई विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस अगेन. Next. Sir, your view on agrochemical sector? Yeah, we are very positive on this sector also. Definitely government का भी focus बहुत ज्यादा है. Looking at the scenario, मतलब जो ये एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, जहां से बहुत सारे एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं. एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट हमारा इस पे डिपेंड है. सो डेफिनेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे जो गवर्नमेंट का भी फोकस है कि उनके जो अर्निंग्स है वो बढ़ाने हैं. सो वो भी चीजों के लिए ये सेक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से प्ले आउट हो सकता है. इन अ वे आई विल नॉट से डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का भी एक अच्छा सपोर्ट इस सेक्टर को हमें नजर आता है. सो अगेन द सेम लॉजिक, जहां पे विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी अवेलेबल है, जहां का ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, ऐसी कंपनीज में आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू track, or those sectors should be tracked. They should be on your radar, and if you find some good opportunities you should invest also. Kalpak Mori ji का क्वेश्चन है, आई एम 29 year old, should I invest via PMS services? See, I think my simple एक simple approach रखने की मैं यहाँ पे सलाह दूंगा आपको. आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को देखते हो तो. सो नॉर्मली पीएमएस में इन्वेस्ट करना चाहिए का. सो ये डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये एक प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है, which I will suggest you people to avoid. The approach should be financial planning based, process oriented approach, understanding inflows, understanding outflows, what is your surplus, what are your financial goals, what is the investment horizon for those financial goals, what is your risk profile, and accordingly you should select your investment options.
सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना ये लास्ट मतलब एक स्टेप होना चाहिए आपकी कंप्लीट प्रोसेस का. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर अ बिगिनर, my strong suggestion would be it's always better to start with mutual funds. जो आपके नीड बेस्ड फाइनेंशियल गोल्स है उनको कवर करने के लिए म्यूचुअल फंड का सहारा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वंस यू अचीव दैट, उसके बाद आपके पास सरप्लस है, आई थिंक इन्वेस्टिंग इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स और trying for such kind of other investment options should be done. सिंपल थिंग, जब सेबी ने भी पीएमएस जैसे प्रोडक्ट्स को बड़े अमाउंट्स, मिनिमम अमाउंट्स के तौर पे कन्वर्ट किया, तो उसके पीछे का लॉजिक भी वही था. सो इनडायरेक्टली सेबी इज आल्सो सजेस्टिंग, इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ स्टार्टर, so it's always better to start with most regulated instruments like mutual funds. I think they have worked really well. They have created values also. The expense ratios are also on a lower side. इवन टू स्टार्ट विद इवन इंडेक्स इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वो ऑप्शंस भी आपको म्यूचुअल फंड्स में काफी रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो के साथ अवेलेबल होंगे. सो माय सिंपल थॉट वुड बी, it's always better to start with mutual funds, cover your financial goals, then you can start going towards these kind of products. But initially, to achieve financial goals, I think mutual fund is a very good instrument. That's what I feel. This is my logic. Mm, okay, and I'm just trying to find out some interesting questions. Yeah, so Mahindra and Mahindra पे views, Mr. Ajay Parik जी का question है, what are your views on Mahindra and Mahindra? Yeah, I think अगर आप ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात करोगे, I was analyzing the Tata Motors story also some time back. Then Mahindra and Mahindra भी, even I feel कि Maruti is also entering into an interesting phase. सी जब भी ये कंपनी जो है ना नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है ना, सो आई थिंक आई हैव सीन अ गुड rally happening in these companies. I understand success of those launches are also very important, so that is a risk normally these companies carry. Now जब हमने टाटा के बारे में बात करेंगे, टाटा मोटर्स के, तो नेक्सॉन, अल्ट्रोज या फिर पंच, ऐसे नई नई गाड़ियां जब उन्होंने लॉन्च की, इलेक्ट्रिक व्हीकल के वेरिएंट्स भी लॉन्च किए, तो आई थिंक दैट्स व्हेन वी हैव सीन ह्यूज बुकिंग्स हैपनिंग. महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी अगर आप देखोगे अभी, तो जिस तरीके से एक्सयूवी 700 या फिर स्कॉर्पियो, जो इंटरेस्ट वहां पे नजर आ रहा है, जब एक्सयूवी 700 आया था, तो जो रेवेन्यू विजिबिलिटी बुकिंग्स ने दी थी 10 से 15 हजार करोड़ की, दैट वाज ह्यूज. अगर ये ऐसी बुकिंग्स मतलब आते हैं और रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली दोज रेवेन्यूज विल गेट कन्वर्टेड इनटू the profits also. So that was the it was gung about. So from that point of view, definitely it's interesting, but when you need to understand, the stock is trading at all time high levels. So normally when the stocks are trading at all time high levels, so इन्वेस्टमेंट एट दोज टाइम्स और इंस्टॉलमेंट्स, बिकॉज नॉर्मली अगर बड़े स्टॉक्स है और आप रेगुलर बेसिस पे उन कंपनीज की शेयर होल्डिंग अपने पोर्टफोलियोज में बढ़ाना चाहते हो, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो इंस्टॉलमेंट्स होंगे एट दीज लेवल्स, I feel they will fetch little lesser returns. That's what. I'm not at all negative about Mahindra and Mahindra. I think they are on right direction. अभी एक तो लॉन्चेस की न्यूज बहुत पॉजिटिव है, प्लस जो प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है. बट द वैल्यूएशंस दे गॉट फॉर दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन वहां पे नजर आ रहा था कंपेयर टू टाटा मोटर्स वैल्यूएशंस, जहां पे टीपीजी ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट टाटा मोटर्स हैज सम काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड नाउ, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक पोल पोजीशन उन्होंने यहाँ पे ली हुई है, जो अभी तक महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं ले पाया है. और दे हैव अनाउंस्ड फ्यू थिंग्स, बट अभी भी आई स्टिल फील कि जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रहा है. सो दैट इज अ रिस्क इन्वेस्टर्स कैन कैरी इन द शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन. बाकी जब तक ये पॉजिटिव फ्लो रहेगा, अभी जैसे आप देखोगे मंथ एंड में आई थिंक स्कॉर्पियो की बुकिंग शुरू होने वाली है, एंड द रेस्पॉन्स इज लुकिंग रियली गुड.
बट आई फील जो लास्ट 3 महीने में ये 40% की रैली इस स्टॉक ने दी है, सो आई थिंक द रैली इज ओवर डन नाउ. That's what my feeling is. So from investing point of view, valuation point of view, I will be little conscious or cautious, sorry, cautious about the valuation part. So from that point of view, but I think earning visibility, growth potential point of view, the company is looking really good. How will I go and buy lump sum huge amounts? So my personal answer to that kind of approach, if I have money and somebody asks me, so I'll be little cautious on that front. Otherwise, company is really good. From कंपनी स्टैंड पॉइंट जब हम 5G एनालिसिस करते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक द फोकस, एसयूवी फोकस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकस इज गुड, सो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता. गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम ऐसा नजर नहीं आता महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ. बट वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो प्रीमियम वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन, ये डिबेट बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ऐसा मुझे लग रहा है. सो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा. सो एकदम एक कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव बिल्ड हो सकती है इस कंपनी के लिए इन द शॉर्ट ड्यूरेशन. नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन कि उसी फेज में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं. सो दैट थिंग शुड नॉट हैपन. दैट्स व्हाट आई फील ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंकुर अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, सर इन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो विच ऑल म्यूचुअल फंड कैपिंग why it should be there? I think it totally depends on your investment horizon. So if your investment horizon is 5 to 7 years, I think large cap side would be good. 7 to 10 years flexi cap, multi cap side would be good. And if you are aggressive investor and investment horizon is more than 10 years, so in that particular case, small and mid cap side size of portfolio also, mutual fund portfolio could be a good solution to these things. गणेश मंडल जी का क्वेश्चन है, सर योर व्यूज ऑन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर. So I think if you look at the housing finance sector currently, the market size of this sector is around $300 billion. In next 5 years time, there are projections that this market can go up to $600 billion. So in 5 years, if the market is almost becoming double, so in that case, the growth rate of this sector is around 14 to 15% CAGR. So in that case, if you look at the market share specifically, so banks are having the major market share and NBFCs and HFCs are having around 35% market share. 65% belongs to bank. Once this HDFC Limited and HDFC Bank merger happens, so in that case, I think the bank market share would be around 85%. So hardly 15%, 15-20% will go towards the HFCs. But overall, looking at the affordable housing plans, looking at the government's focus on housing for all, plus the increased income levels in specifically into tier 1 and tier 2 cities. So I think this particular sector is looking good. There is pressure on banks also and NBFCs, HFCs from the valuation point of view. थोड़े ये stocks correct हुए हैं. But I always feel that when companies have mortgage loans, जो long term loans होते हैं, तो वहां पे rising interest rate scenario actually worked really well for this sector rather than bad. So focus on those companies which are capable of raising money at reasonable interest rates. I think those companies will do well. So this is one sector which should be on your radar. So next 5-10 years are looking quite good for this particular sector. There's no doubt about that.
There is a question: what do you think will be India's GDP growth rate for the next decade? Looking at the past, the government always over promises and under delivers. See, I think this GDP problem is not only about India's problem. This was world problem. So I still feel we are better placed with that. My What are my expectations? I think India is in a position to achieve 7% kind of GDP growth, and plus a retail inflation of 4 to 6%, and you need to add these numbers, and that's what the basic expectation from your equity as an asset class. Definitely there will be some outperformance also. Baki over promises, under delivery, I think this is happening all over world. Now I don't want to compare it. No, that government in though that phase they worked really well. In this phase they are not working that well. So I think the major bull run which we have seen between 2004 to 2008, I think global economy was doing really well, and that's when we have also performed well. We cannot live in a decoupled world. So what is happening in US, what is happening in Europe, definitely they will have some kind of ripple effects on our economy also. Rising crude prices, rising interest rates, high inflation scenarios are going to play some kind of spoil game. So that will be there for some time, but I still feel we are domestic consumption economy. The demographic dividend is really good. So consumption agar hum dekhenge to from that point of view, all those things are looking quite good. So I am positive about the GDP growth. I still feel we will be in top one or two positions from the GDP point of view. Let's see how things go ahead. I feel in next 3 to 4 quarters, the worst will be behind us. And once the crude oil prices starts going down, so hopefully things will be much better in coming days. Pratik ji ka question hai, any insights on TCNS clothing? No, I am not tracking this particular company. Pratik ji, I am really very sorry for that. But I'll ask my team if they are following, some analyst is following this company. So then we'll be able to give you means a note or something kind of that will be released. But I'm not following this company regular. This was a paid chat. That's why I need to answer. अब बोलोगे यार नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन क्यों लिया, but that was a paid chat and I need to give if we know the answer, so I would have given. But I'll tell my team if they find something interesting. So वैसा रिलीज हो जाता है हमारे स्टॉकोमीटर पे, उसका एनालिसिस रिलीज हो जाता है if we are following that. Your views on Reliance Industries, Amit Jain ji ka question hai. So I think a lot of news is coming about the health of Mr. Mukesh Ambani, or he is passing on the baton to his kids. So then the criticism is coming: is it right? Isn't it a nepotism? Will they be able to do that? So if these people will not be able to do that, means तो यहाँ पे failure Mr. Mukesh Ambani जी का होगा, ऐसा मुझे लगता है. So I think let's give some benefits of doubt. So let's wait for some more time on Reliance Industries. They have two growth engines, retail and Geo. The green energy business also, they have quite huge plans. They've already planned almost $10 billion of investment, 75,000 crore rupees. So from that point of view, if we look at, so I think they will have a third engine, growth engine also. The oil to chemical business, definitely in these rising crude oil scenario, is really working well. Though there is some I think windfall gain tax which will be levied, so that will impact their profitability. But this quarter, the quarter one of FY23, जिसमें कोई windfall gains tax नहीं था, I think this is going to be the best ever quarter for Reliance Industries. Though uska reaction market kitna dega, that will be interesting to see, because everybody knows that now from this quarter there will be a windfall gains tax. So earnings will not be that high in this particular next quarter. means ये जो नया quarter शुरू हुआ है compared to June. So normally अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आई वुड हैव सेड कि बहुत ही बढ़िया रिएक्शन शायद मार्केट की तरफ से इन कंपनीज को मिल सकता, इस कंपनी को मिल सकता था. बट नाउ विद सम न्यूज रिगार्डिंग विंडफॉल टैक्स, so the upside could be limited.
but from the longer term horizon, I strongly feel the two growth engines and the third in pipeline. I think the future is looking good for Reliance Industries. There is no doubt. Net debt free hai wo company. So that is also not a worry. At right time, he raised money for Geo, for retail, from the rights issue also. So all those things worked really well in their capital position. So debt levels are quite manageable for Reliance Industries. So the balance sheet is also looking quite good compared to the earlier years. And the kind of faith these big players like Google, Facebook have shown, or even the private equity players, or almost 12, 13 private equity players also invested in the company, in their subsidiaries. I think all those things will work well. That's what I feel. Let's see क्या क्या होता है. We are watching this company quite closely, even on Stockometer also. We keep on analyzing, keep on updating the things regarding Reliance Industries. Our analysis is available on that. So one more small marketing talk. So highest ever discount of 55% is available on our model portfolios. So please visit InvestYadnya.in, use promo code monsoon and get highest ever discount of 55%. मात्र 4500 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. InvestYadnya.in को विजिट करके जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों. ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, योर व्यू फॉर नेक्स्ट 5 years. सी आई थिंक जो उन्होंने बोला था एट द टाइम ऑफ मर्जर कि कैसे कैसे कंपनी मतलब चेंज होगी, क्या क्या उनके विजन है, क्या क्या नंबर्स वो अचीव करना चाहते हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर ली है. So that's why market is not giving valuation to this company. I think market is still a little worried about their legacy loans, which are around 5-6 thousand crore rupees. Though Mr. V. Vaidyanathan ji हमेशा बोलते हैं कि now everything is under control and you will start looking at the growth. When we are looking at their balance sheet, when we are looking at their loan book, I think things are improving, and the kind of focus they have, the complete DNA change जो है wholesale banking, corporate lending से completely retail lending पे, I think they are doing it really well. Almost 65% का जो उनका book है वो अभी retail lending का है, and I will not be surprised this book will go up to 80-90% or even 100% also towards retail lending. That's what my feeling would be. The management visibility is also there. I think he is going to be there for next 10 plus years, Mr. V. Vaidyanathan. So if you believe in him, that's when you should take that call. See, when you need to understand, when he was running an NBFC, when he was raising capital at debt capital or money from markets at 13-14% and still managing that business so well. So I feel when he has a bank license, when he is getting money in current account, savings account, fixed deposits at much lower interest rates, I don't think ऐसा कोई problem होगा to manage that book. So I think let's wait for some more time. I strongly feel that this is one good company to watch a close or to have a close watch. So let's see, let's wait क्या होता है. But when I had a discussion with him, so the genuineness or the clarity about thoughts was quite good, and that's what I feel. So if you believe in him, if you believe in his processes, that's when, or the kind of DNA he's trying to implement in IDFC First Bank, I think you need to believe, and then if you want to invest, you can take a call. But if you have some doubts, so I think there are other options available for investing. So I'll not say no, please invest, wahi hai ek company hai, or matlab, so not like that. So it's investing is all about finding that conviction. If you have that conviction, so you can take those calls. Sometimes for some time the sluggishness or the underperformance will be little difficult to handle, but if you handle that, you keep that conviction. Normally I have seen now
this is not a direct comparison between IDFC First Bank and ITC, but you have seen the kind of underperformance ITC has shown, and now when markets went down, the stock is up by 40%. So the outperformance is almost 50-60%. So जो भी पहले का अंडर परफॉर्मेंस था, आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से आईटीसी ने वो कवर अप किया है, प्लस साल का 5-6% का डिविडेंड पे आउट भी मिला है लोगों को. सो थिंग्स हैपन, एंड when things happen, so the logics will so बहुत सारे logics भी वहां पे defy हो जाते हैं. So from those things, so I strongly feel you need to believe in them, you need to have a good conviction. If those things are there, I think they are on right track. They have not saying यार नहीं नहीं हमने ये बोला था हम वो अचीव नहीं कर पा रहे. I think whatever they have said, they are achieving those numbers. So still market is not giving valuation because institutional investors are still not back. ओवरऑल वैसे भी तो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है यार. मतलब कौन सी वो बैंक है, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक थोड़ा सा ऊपर आए है, अदरवाइज द अंडर परफॉर्मेंस इज अक्रॉस द बैंकिंग इंडस्ट्री. बट अगर आप लॉन्ग टर्म के नंबर्स देखोगे या परफॉर्मेंसेस देखोगे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के, तो वो भी कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म किया, मतलब रिसेंट 1-2 साल के मत देखिए, लॉन्ग टर्म के देखिए. सो यू विल लुक एट दैट क्या यार अल्टीमेटली इन्होंने भी तो अंडर परफॉर्म ही किया है. So all those things you need to keep in mind and accordingly you need to take a call. So अगर उन्होंने जो बोला है वो नहीं कर पा रहे, तो you can start questioning them. बट अगर जो उन्होंने बोला है वो नंबर्स पे वो अचीव कर रहे हैं या फिर ओवर अचीव कर रहे हैं या फिर जल्दी अचीव कर रहे हैं, so I think you need to believe in them. So that's why. So we quite closely track this particular company. So on a regular basis I keep on covering. So अभी भी एक जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो I'll try and make a video, और एटलीस्ट हमारा एनालिसिस तो अपलोड कर ही देंगे इस डॉक्यूमेंट पे, तो you will get a clear idea about our view. अमन जी का क्वेश्चन है, सर एचडीएफसी बैंक अपना आईटी एंड सर्विस कब सही करेगा? आई थिंक दे आर ट्राइंग रियली हार्ड. द न्यू सीईओ's focus is also on that, but HDFC Bank is not about that's my feeling. I mean, whenever I'm going out, I'm looking at the consumption. So जो penetration है HDFC Bank का, I think that is phenomenal. मुझे ऐसे लगता है सिंपली फेनोमिनल. मतलब क्रेडिट कार्ड उनके जो मेन पेन पॉइंट को टच किया था आरबीआई ने, या फिर उनका जो सबसे बेस्ट बिजनेस है इन अ वे, जिस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेशन किया हुआ है इन द क्रेडिट कार्ड बिजनेस, उसी को उन्होंने जानबूझ के हर्ट किया कि नाउ यू विल टेक दी थिंग्स क्वाइट सीरियसली. सो लेट्स जस्ट होप दैट उनका एचडीएफसी 2.0 ये प्रोग्राम जो है वो मेजरली फोकस उन्होंने आईटी पे ही किया है. सो देखते हैं क्या क्या चीजें आती है आने वाले समय में. बट कैसा है कि बैंकिंग बिजनेस इज नॉट about how convenient things are there. लाइक जैसे हमें अभी क्या हो गया है कि जो कन्वीनियंस प्रोवाइड हो रहा है, स्पेसिफिकली जो फिनटेक गाइज है उनकी तरफ से जो कन्वीनियंस हम देखते हैं, उनके एप्स वगैरह यूज करते हैं, तो हमें लगता है यार ये कितना जबरदस्त है और ये इनका कितना खराब है. बट आई फील banking business is all about lending business, and lending business is all about risk management business, और उस business के वो मास्टर है ऐसा मुझे लगता है. Look at their numbers, look at their NPS. यार मतलब इतना सारा खराब होने की माहौल खराब होने के बावजूद उनके नेट एनपीएस नेवर क्रॉस्ड मतलब आई थिंक 0.5% or something like that. So we need या फिर 1%. I think we need to understand these things. So banking is not about कि आप कितनी अच्छी तरीके से स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो या फिर ऑनलाइन आप पेमेंट कैसे करते हो. अब मुझे बताओ, आप अगर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए गूगल पे यूज कर रहे हो या फिर फोन पे यूज कर रहे हो या जो भी है पेटीएम यूज कर रहे हो, सो अल्टीमेटली अगर आप एचडीएफसी बैंक के साथ जुड़े हुए तो आप उसको उस अकाउंट को लिंक कर रहे हो, थिंग्स आर हैपनिंग क्वाइट स्मूथली. सो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, बट मुझे ऐसा लगता है these fintech guys are not their direct competitors. I think they will offer so many collaboration opportunities, and that's how this industry is going to grow. I genuinely feel that. So वो चीज देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है. So देखते हैं क्या होता है. मोनिशा ट्रैवल स्टोरीज का क्वेश्चन है, सर आई एम हाउस वाइफ एंड डोंट हैव एनी इनकम बट आई हैव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स.
of 1 lakh, should I submit ITR? See, I think it's not compulsory. बट फिर भी एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने के लिए अगर आप आईटीआर फाइल करोगे, द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल. सो ऑनलाइन जाके आप वो चीजें कर सकते हो. सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल, इफ यू आर इन्वेस्टिंग, it you don't go by no, is it compulsory or is it not compulsory. It's always better, अगर आप आईटीआर आपके रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, ऐसा उसमें कोई कॉस्ट तो है नहीं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड वहां पे काफी अच्छा डेवलप हो जाएगा. इट्स ऑलवेज गुड दैट वे. अगर कंपलसरी नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लुकिंग एट द नंबर्स, इट इज नॉट कंपलसरी, बट इट्स ऑलवेज बेटर to file your income tax returns, and the process is quite simple. You will find so many videos online how to file income tax returns. So I think the process is quite simple. So I suggest it's always better to have things in line. So वो प्रोसेस फॉलो करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे. Interesting question from Mr. Rahul Roy. Rahul Rai ji. So please tell us how we can become a successful investor with 50,000 salary. Is with 50, 30, 20 rules that are perfect to make wealthy corpus of 10 crore rupees. So Rahul ji, if you are earning 50,000 rupees and 50, 30, 20 rule you are following, I feel you will achieve your financial goals. There is no doubt about that. So how to achieve 20 crore rupees of corpus? I think there are ample ample sample calculators available on Google, कि जहां पे वो आपको बता सकते हैं, if you want to achieve 20 crore rupees of corpus, how much you need to invest. So 50, 30, 20 rule is to achieve your financial goals. This goal of wealth creation is a different one. Definitely this 20 crore will be able to cover all your financial goals. So from that point of view, you can look at that. But whether 50, 30, 20 with 50,000 rupees salary will be able to achieve 20 crore rupees, no, it will not be. But this 50, 30, 20 will set a very good process in your mind. And whenever the salary is increasing, if you are following that, after some time, this 50, 30, 20 will become around 30, 50, 20, or even 30, 60, 10, such kind of things. Because with rising salaries, I know the expenses will also be rising, but still I have seen with people in their 40s and 50s, they save at least 60 to 70% of their income. That's how अगर वो discipline follow किया है 50, 30, 20 का. So I feel कि to achieving that 20 crore corpus, उससे पहले जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उनको अचीव करने के लिए कितना कॉर्पस सेव करना है और कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये फाइंड आउट कीजिए. वंस द सेविंग्स पोर्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि चलो यार कोई एक बड़ा कॉर्पस अब क्रिएट करते हैं. सो मेरा पहला सिंपल, आई नो दैट कि आप लोगों को बहुत बोरिंग लगते होंगे ये आंसर, ये क्या हमेशा वही वही चीजें बोलते रहते, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. So when we call, I call myself as a tuchha prani, so who believes in long-term investing, and I'll add one more thing in that, who believes in long-term investing and who believes in financial planning also. So financial planning के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंशियल गोल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिंक करना, ये भी मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रोसेस है. तो इसमें अब तुच्छ प्राणी में हम और एक चीज में खुद के लिए, मतलब मैं पहले खुद को अप्लाई करता हूँ. सो नथिंग, नॉट ट्राइंग टू डीमीन एनीबडी, बट मैं अगर तुच्छ प्राणी हूं तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी बिलीव करता हूं और मैं बहुत स्ट्रांगली फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बिलीव करता हूं. सो वो चीज अगर आप करोगे तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स आपको आ सकते हैं. ये आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस, आई लिंक इट टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग और ओवरऑल थॉट प्रोसेस. व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस, कि ये फंड में करूं क्या, वो फंड में करूं क्या, ये स्टॉक में करूं क्या, इसमें से निकलूं क्या. आई थिंक ऑल दोज थिंग्स कैन बी लिंक्ड टू योर पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस. आई थिंक आंसर जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने आएगा एंड एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगा. स्पेकुलेशन आपके माइंड से कंप्लीटली वहां पे निकल जाएगा एंड गोल अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लेके चलोगे तो फिर गलतियां जो है ना वो बहुत कम होगी. You will not react to typical situations. I think not reacting is also a very big thing. अगर हम वो उसको follow करते हैं तो I've I think shared experiences also with you in 2020 when the pandemic happened. In the month of March and April, I got a lot of questions from my investors whose money I'm managing. कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना है. So for that,
नॉर्मली कुछ भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या फिर कोई अदर यूरो क्राइसिस आता है या फिर डिमोनेटाइजेशन होने के बाद या फिर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, so ये सारे फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें थी. So at least we had some idea, some kind of analysis in front of us to give. बट पैंडेमिक में ऐसा हुआ कि यार क्या होगा, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि 10% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट, लोग मर जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. सो दोस काइंड ऑफ क्रेजी थिंग्स व्हिच वर कमिंग आउट. सो डेफिनेटली तो ऐसा था कि सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द रिएक्शन वाज कि सर लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, वी हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ इवेंट्स. इसके पहले वो इवेंट हुआ था 1918 में, मतलब 100 साल पहले, तो पता नहीं उस वो कैसा उस वक्त रिएक्शंस थे. ऐसा कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या फिर वीडियोस या फिर ट्रैक रिकॉर्ड्स तो हमारे पास नहीं है. तो वी जस्ट डिसाइडेड सर विल वेट फॉर सम मोर टाइम. सो बिकॉज टेकिंग आउट मनी क्या करना है उसका वो भी समझ में नहीं आ रहा है. अगर ओवरऑल इकोनॉमी फेल होती है तो बैंक्स भी फेल हो जाएंगे, तो वो पैसा वहां पे भी कौन सा सेफ रहने वाला है. सो ऑल क्रेजी थॉट्स वर कमिंग आउट. So so we decided let's wait for some more time. Let's wait for 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. Let's see how things go ahead. And things turned out really well after that. So जो worst case scenarios predict किए गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ. So that was a big relief for investors. अब इसी ऐसा किसी ने अगर आपको बोला था होता कि भाई 7,500 पे निफ्टी गया था, 8,000 पे निफ्टी गया था और वहां से 1.5 साल में निफ्टी कैन कम बैक टू 18,000 प्लस लेवल्स, तो सब बोलते यार क्या मजाक कर रहे हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता. दैट्स द रियलिटी ऑफ मार्केट्स. सो आई फील कि प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, डू नॉट रिएक्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग से जाइए. तुच्छ प्राणी बनना ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए टू अचीव आवर फाइनेंशियल गोल्स एंड टू बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्यूज ऑन टीसीएस, अतीश जी का रिलायंस पे मैंने पहले ही दे दिया है व्यू अपना. सो टीसीएस पे व्यू मांगा है उन्होंने. सो टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली बिलो एक्सपेक्टेशन आया मेरे सामने ही अभी. आई थिंक टीसीएस का मतलब रिजल्ट का वो न्यूज़पेपर आज सुबह जो मैं पढ़ रहा था. सो टीसीएस नेट प्रॉफिट राइजेस बाय 5.2% इन Q1 एंड मिसेस एस्टिमेट्स. तो व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट, क्यों यहाँ पे फॉल हुआ है? मार्जिन्स जो है वो फॉल हो चुके हैं. सो आई थिंक 23.5% पे मार्जिन्स आ चुके हैं टीसीएस के, 23.5%. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सो एट्रिशन जो है वो 19.7% से गया, ऑपरेटिंग मार्जिन्स 25% से 23.1% तक नीचे गए हैं. सो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन थी, जो बिल्ड हुई थी एक्सपेक्टेशन इन आईटी इंडस्ट्री कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे ऑटोमेशन पे या फिर आईटी इंटीग्रेशन पे या आईटी स्पेंड के लिए बहुत सारा प्रीपोनमेंट होगा, एंड व्हिच हैपेंड आल्सो. सो जो चीजें 10 साल में होनी थी वो 3 से 5 साल में हो सकती है, ऐसा लगा था लोगों को. एंड दे गॉट दीज कंपनीज गॉट लॉट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स आल्सो. बट व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, the abundant amount of liquidity which got created because of this quantitative easing, तो ये जो पैसा मार्केट में आ गया, तो ये इजी लिक्विडिटी ने इवन बहुत सारा पैसा प्राइवेट इक्विटी के तरफ से स्टार्टअप्स में भी गया. और आजकल तो आपको देख रहे हो कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर एडुटेक, फूड सेक्टर फूड टेक, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर फिनटेक, तो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा अवेलेबल हो गया. And they had a lot of crazy ideas also. So for that they needed good number of people, IT people, to take care of these things, and that's when the craziness started. So initially they disrupted the typical IT industry. पहले ही आईटी इंडस्ट्री में 2015 से लेके 2020 तक के आप सैलरी हाइक्स देखो आईटी इंडस्ट्री में, those were quite sluggish salary hikes, single digit में salary hikes हो रहे थे. So now with the rising experience and the demand from these startup guys, plus on top of that these old players also got a lot of projects, तो उनके लिए उनको भी एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट थी और इतना बड़ा सप्लाई मार्केट में अवेलेबल नहीं था. एंड दैट्स व्हेन ये जो चीजें हुई ना, इधर से उधर उधर से इधर, ये एट्रिशन वगैरह, सो उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहा.
सो भले ही वहां पे रेवेन्यूज वगैरह ग्रो हो रहे हैं आईटी कंपनीज के, but the kind of expense ratios they are having on their employees, I think they were going out of the means over the roof, and that's when the margins started going down. Now I heard that at least my industry friends, IT industry friends, are suggesting to me that कि भाई अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, एंड वी आर नॉट स्टॉपिंग द एम्प्लॉयज विच आर गोइंग. तो पहले कैसा होता रहा, भाई कितना मिल रहा है तुझे, चल मैं भी देता हूँ, चल रुक जा, कितना मिला है, 40% का मिला है, चल मैं भी 40% मैच करता हूँ. जब तक वो मैच करता है तब तक उसको और एक 50% की राइज वाला लेटर मिल जाता है. दैट्स व्हाट दोज क्रेजी थिंग्स हैपेंड इन बिटवीन, एंड दैट्स व्हाई द इंडस्ट्री स्ट्रगल्ड. So hopefully now everybody understood ki boss, let's wait now. It's better not to match those packages. So if they want to go, they will go. And that's when these high attritions could be visible for next 1 or 2 quarters. And then the industry will stabilize. That's what I feel. So till that time, मुझे लगता है ये attrition वगैरह का जो pressure है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. But मार्जिन्स का प्रेशर 1-2 क्वार्टर के लिए कंपनीज पे रह सकता है. एक्सपेक्टेशन ऐसे बिल्ड हुई थी कि जो टीसीएस 26.5% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे गया था, द एक्सपेक्टेशंस वर लाइक कि क्या ये मार्जिन इवन 28, 29, 30% तक भी जा सकते हैं क्या. सो दोज वर द crazy assumptions coming out from the analyst people, and it is not happening. And that's why जब ये expectations बहुत ज्यादा build हो गए, so वैल्यूएशंस भी क्रेजीली बढ़ गए. सो जो आईटी सेक्टर में हमने वैल्यूएशंस देखे थे, 3 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, इनके जो मीडियन पी रेशियोज थे उनके ऊपर ये स्टॉक्स जाके ट्रेड हो रहे थे. चलो आई विल नॉट गो इनटू 7 and 10 years ऑफ पी रेशियोज, बट इवन फॉर 3 and 5 years के पी रेशियोज के 50% के ऊपर के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, एंड दैट वाज द मेन पेन पॉइंट. सो जब चीजें ऐसी होती है, सो लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो प्ले आउट होता है, एंड दैट्स व्हेन तो ये प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ, एट्रिशन का प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया. जो ऐसा लग रहा था कि यार इन कंपनीज को शायद अब ऑफिस वगैरह शुरू नहीं करने पड़ेंगे, वर्क फ्रॉम होम कुड बी अ न्यू थिंग, तो उनके बहुत सारे वहां पे भी पैसे बच सकते हैं, वो भी मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है. बट नाउ आई डोंट नो, बट मेरे दोस्त जो है आईटी इंडस्ट्री में अब थोड़ा सा रो धो के उनका भी जाना शुरू हो चुका है, एंड नाउ दे आर एट गुड पोजीशंस. तो उनको अगर टीम को बुलाना है तो भाई तुम्हें भी तो जाना ही होगा. इट इज द डिबेट इज नॉट अबाउट कि यार घर से काम तो होता है, क्यों आना है. नाउ इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, there are advantages and there are disadvantages, so I don't want to go. I understand a lot of people who are watching this video, they might be working from home, तो उनको ऐसा लगेगा यार ये क्या है यार, ये मतलब अच्छा तो काम कर रहे थे हम घर बैठ के, क्यों ये 1-1 घंटे की ट्रैवल शुरू हो रही है. सो आई अंडरस्टैंड, बट जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई थी कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आएगा, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन नाउ. सो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो coming back to the point, I think the margin pressure can continue for next 2 to 3 quarters. Then things will stabilize, but the crazy valuations cannot continue. I think आज नहीं तो कल 5 year के जो मीडियन पी रेशियोज है वहीं पे ये इंडस्ट्री ट्रेड करेगी. एंड वंस दी अगर कोई आउट परफॉर्मर रहता है तो उसको थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ दे आर गिविंग वो हो सकता है. ये समझना यहाँ पे जरूरी होगा. So from that point of view, you need to be careful about these sectors. Next question. There is a question on IEX. तो अब या डेफिनेटली नया कंपिटिटर आया है तो उसकी वजह से बहुत सारे मतलब प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, प्रोजेक्शंस आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेशर इस कंपनी पे बिल्ड होना था बिकॉज ऑफ दी लिटिल प्रीमियम वैल्यूएशंस वो हो चुका है. नाउ आई थिंक विल हैव टू वॉच ऑन द परफॉर्मेंस. आई सीरियसली डाउट कि ये जो नया प्लेयर आया उसकी वजह से एकदम मार्केट शेयर में बहुत बड़ा डेंट होगा क्या. सो आई सीरियसली डाउट दैट. वी आर वॉचिंग दैट क्वाइट क्लोजली. जब भी कोई इंडस्ट्री अच्छी चल रही होती है तो ऑब्वियसली वहां पे कंपिटिटर्स आती है, एंड इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री. दैट्स व्हाट आई फील कि so we'll wait for some more time. I don't think क्या जो नया प्लेयर आया उसकी वजह से इमीडिएटली उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा.
So we'll wait for some more time and then we'll take a call. But we are still positive about IEX as of now, but we will keep you updated about that. पलाश जी का एक कमेंट है, जस्ट वांट टू गिव द अदर साइड ऑफ द ऑन द अट्रिशन फॉर 2 decades social pressure told underpaid graduates that they had to settle. Now they don't. I completely agree, because I still remember when we came out in 2004-5. So at that point of time the salaries were around 13-14,000 or 15,000 or 20 up to 20,000, and now the salaries are 30, 40 and 50,000. So definitely looking at the phase almost 16-17 years, and if the rise is hardly 100%, so it is not justified. There is no doubt about that, and that could be another reason why these things are happening. So pressure will be there, या फिर हो सकता है इन कंपनीज को लोअर मार्जिन पे सेटल करना होगा आने वाले समय में. वैसे भी हम अगर मिड कैप आईटी कंपनीज देखेंगे, देयर मार्जिन्स आर अराउंड 15-18%. ओनली टीसीएस या फिर थोड़ा सा इंफोसिस, एचसीएल, दे आर ऑन. एचसीएल तो फिर भी थोड़ा सा नीचे ही है. टीसीएस ही है जो सबसे ज्यादा मार्जिन्स enjoy करती है. So definitely I think the pressure will be on a higher side. There is no doubt about that. Sectors to watch for next 20 years, ये क्वेश्चन आया है. So I think जैसे हमने बोला था, ग्रीन एनर्जी एक सेक्टर है जो बढ़िया है. फ्रॉम कुछ भी हो जाए दुनिया में, बट एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो रहेगा. So there is no alternative, I feel. If we want to grow as an economy, I think banking sector is also very important. So वो भी एक sector है that we should keep on watching. So एक typical अगर आपको चीज देखनी है, या फिर even IT इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, भले ही ग्रोथ रेट्स इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, but those are the sectors which will be there. So या फिर retail एक sector है जो रहेगा. So I think there are so many sectors here, so which will be there. टिपिकल सबसे ज्यादा जो फोकस है, मुझे लगता है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है. सो दैट इज वन सेक्टर. अगर आप प्रायोरिटी करना चाहोगे तो उस सेक्टर पे आपकी नजर बहुत ही क्लोजली होनी चाहिए. एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, इफ यू वांट टू ग्रो एज एन इकोनॉमी, which is, and we want to grow it for real long, like there are predictions na, by 2050 I think we will be number 2 economy in GDP wise, so we'll beat US also. China will be number 1. So if we are thinking on those terms, I strongly feel that banking is one sector which should do well, or that could be the backbone of our growth. That's what I genuinely feel. So उस sector पे मतलब ऐसे कुछ sectors है. बाकी I keep on talking. So if you new things also can come out, so we can't deny that. So let's see क्या क्या होता है. Let me just see, because we are live on Twitter also, so I don't know whether Twitter पे कुछ questions आ रहे हैं क्या. So I'll just check that if they are coming on Twitter also. So it's अच्छा, ज़्यादा लोग नहीं है Twitter पे. So no, I don't think there are any questions on Twitter. So okay, ठीक है. So let's again go back to our YouTube or LinkedIn questions. धीरेन पटेल जी का क्वेश्चन है, 2 times my question ignored. Just a second, धीरेन जी. I'm not from that मेरे टिपिकल सेटअप से नहीं हो, तो एक दो स्क्रीन्स वहां होते, तो I normally track. So let me just say, yeah, okay. View on Welspun Corp and Tata Steel hydrogen pipe. Yeah, Tata Steel hydrogen pipe. I Tata Steel पे hydrogen pipe. I don't know what you are exactly asking about. At least I have not tracked that news. So Welspun Corp, I think overall अगर आप देखोगे तो कमोडिटी रिलेटेड जो बिजनेसेस है ना, तो मुझे लगता है कि साइक्लिकल बिजनेसेस है. तो ओवरऑल मतलब अगर आपको एक व्यू इस पे देना है, तो मुझे लगता है कि investing in these companies when the talks are on a higher side, it's I think it's always better to avoid things. These sectors are good when the talks are quite less. टिपिकल डाउन साइकिल में ही इन कंपनीज की तरफ थोड़ा सा, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो. So if you understand these businesses or cycles of these businesses well, that's when one should touch these companies. Otherwise it's better to avoid such companies. बाकी
आई एम नॉट गेटिंग व्हाट दैट हाइड्रोजन पाइप वाज, जो क्वेश्चन में आपने पूछा था. सो I am not tracking that because I'm not a very big fan of steel sector. Though बीच में मैंने थोड़ा टाटा स्टील को कवर किया था from different point of view. When I was reading their annual report, so एन चंद्रा जी के जो comments थे, तो that got my attention, and then that's when I went into that little deeper. So I felt as a company, it was a good thing. And then उसके बाद स्टॉक ऊपर गया. I got few कमेंट्स दैट यार वाह सर आपने बहुत सही टाइम पे बोला. सो दैट वाज प्योर लक कि चाइना ने 220 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस दिया और उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो गया, और इसकी वजह से स्टील के प्राइसेस ऊपर जाएंगे. सो इट वाज प्योर लक. आई हैड नथिंग टू डू विद दैट. So and it's better, I think I should accept these things that ki bhai I don't know those things. So sometimes it's sheer luck, या फिर मॉर्गन हाउसल जी ने बोला ही है ना कि लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फैक्टर इन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल. या नो, नेक्स्ट क्वेश्चंस वुड बी कि कब आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर का ये. सो लिटिल वाज लिटिल बिजी, बट अगेन आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट वीक द थिंग्स, द book review or chapter wise reviews will start again, so there is no problem. I don't know how many people are live, but I hope that कि 1500-2000 लाइक्स तो एटलीस्ट बनते हैं. इस सेशन के 10 बजे आया हूं मैं, ऑलमोस्ट 11:15 बज चुके हैं. सो आई होप दैट यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस सत्संग. एंड फिर से एक बार छोटा सा मार्केटिंग टॉक. सो मॉनसून सेल इज ऑन. मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% यू विल गेट on our model portfolios. Complete model portfolio subscription is available at मात्र 4500 rupees. And अगर आप combo offers के लिए जाते हो तो definitely discounts could be as high as 65% also. Stockometer Plus, Fundometer and model portfolios are our main products जो जिसपे हम बहुत ज्यादा रिसर्च हमारा होता है. बाकी knowledge banks are there, tax yadnya, finplan yadnya. So that is from knowledge point of view you can refer. But अगर रिसर्च पे ही आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना. प्रोमो कोड इज मॉनसून, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55%. सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये भी लाइव सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आई ट्राई एंड कीप ऑन कमिंग रेगुलरली, बट आई कांट प्रॉमिस द टाइम. बट आई थिंक आपका जब सत्संग नहीं होता है नेक्स्ट डे, सॉरी अपना ताजा खबर नहीं होती है, सो इन दैट केस आज थोड़ा सा दोपहर में थोड़ा रेस्ट भी लिया था, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन अ पोजीशन टू डू दिस लाइव सेशन. सो आशा करता हूँ कि आपको ये लाइव सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा. सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे मदद हो सकती है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल्स को शेयर कीजिएगा उनके साथ. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर ऑल्सो. अडे परिमल इज माई ट्विटर हैंडल. तो वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स आई कीप ऑन शेयरिंग, नोट्स वगैरह वहां पे काफी अच्छे शेयर होते हैं, तो वो भी आप हमें फॉलो कर सकते हो. तो InvestYadnya.in को विजिट करके मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज करके आप लोग 55% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ले सकते हो. कॉम्बो ऑफर्स लोगे तो 65% तक भी डिस्काउंट जा सकता है. तो जरूर उसका लाभ उठाइएगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद, शुभ रात्रि.